Hello and welcome, Shalini. We are pleased to have you here with us today. First of all, many heartiest congratulations for your amazing success. We know for a fact that you cleared NET exam twice, first in December 2018, then in June 2019, and then in December 2019, you cleared NET and JRF both. So, how do you feel about this success? First of all, I want to thank you so much, ma'am, for inviting me for the interview. And I feel glad after clearing UGC NET JRF twice, NET twice and JRF for the first time. So I feel good after clearing NET JRF in Code 55 Labor Law. Okay. So, can you please tell something about yourself? Like, what is your educational background? Where are you from? Yes, ma'am. My name is Shalini Devangan. I am from Chhattisgarh. I have done my academics in Bilaspur, Chhattisgarh, CMD PG College. My graduation from CMD PG College, Bilaspur, and my post graduation from Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Central University, Bilaspur, Chhattisgarh itself. I completed my post graduation in 2015, August 2015. And after that, after clearing my post graduation, I was started preparing for PSU exams and PSU exams plus for the UGC NET exam both. Okay. So, just tell me, like, since you cleared this NET JRF in human resource management and labor welfare, and I know this for sure that it includes lot of laws, you know. So, Yes, ma'am. how do you memorize everything? Like, the syllabus is way too vast. So, Yes, ma'am. Ma'am, before purchasing Human Paritas, I refers a lot of book from my traditional books from where I have studied in MBA. So I prepared notes from them, but still I think that was not enough to crack NET JRF in Code 55. After when I got to know about Human Paritas, I purchased material from Human Paritas, and after studying from Human Paritas material one by one, I cleared a lot of concepts. There was a major issue in my study was there was a lot of definitions in labor law. For example, in Industrial Dispute Act, we have a definition of wages, or in Payment of Wages Act, we have definition of wages, and in Minimum Wages Act, we have definition of wages. So when in the exam they asked what is included in the term wages, I got confused that what I have studied in Payment of Wages Act, it was different, and what I have studied in Minimum Wages Act, it was different. But when I gave the exam, I create a lot of confusion in my mind what I have studied. So after after purchasing the study material from Human Paritas, I prepared a note of it that what is included in the definition of wages in Payment of Wages Act, and in payment of, for example, I am just taking a hypothetical example that what is included in Payment of Wages Act and what is included in the Minimum Wages Act. So I just took that point wages, and I prepared a note that what is included in Payment of Wages Act and what is excluded. So from the study material, I prepared notes and I studied it one by one, and practicing the hard copy of the question bank what you have gave to us. I practiced that question bank twice, thrice, till जब तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए तब तक मैं प्रैक्टिस करती रही कि सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो जाए, और कितना टाइम वो क्वेश्चन बैंक ले रहा है मुझे कंप्लीट करने में, वो चीज़ मैं देखती थी कि कितनी जल्दी वो कंप्लीट हो रहा है, मेरे कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, उसको फिर से सुधारना है, वो चीज़ मैं बड़ा ध्यान रखती थी. yeah, so based on your experience of this whole preparation time period, what are those 2-3 tricks or tips that you would like to advise to our fellow aspirants who are going to give the exam this 2022? I must want to suggest to the fellow aspirants that if you want to study labor law, clear your concepts first.
जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है वहाँ पे आप बहुत ही फोकस करिए कि कहाँ कहाँ पे मुझसे गलतियाँ हो रही है। मुझसे बेसिकली यही गलतियाँ होती थी, जहाँ पे डेफिनेशंस आते थे वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि ये मैंने कहाँ पे पढ़ा था, ये डेफिनेशन मैंने कौन से एक्ट पे पढ़ा था, अरे इस एक्ट पे मैंने ये डेफिनेशन पढ़ा था और इस एक्ट में मैंने ये डेफिनेशन पढ़ा था, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था। तो मैंने सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ मैंने जो आपने जो मॉक टेस्ट दिए थे वो भी प्रैक्टिस करते गई साथ में, और साथ में जो आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया था उसे भी प्रैक्टिस करते गई। मैंने आपकी स्टडी मटेरियल 2 बार परचेज की थी, इन 2018 एंड इन अक्टूबर 2019 ऑल्सो। सो जब मैंने अक्टूबर 2019 में मैंने आपसे जब स्टडी मटेरियल परचेज किया था तो मुझे ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक भी मिले थे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मॉक टेस्ट एंड प्लस उसमें सबसे बेनिफिट जो है ह्यूमन पैराडॉक्स का स्टडी मटेरियल में, जो उसमें टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एक एक टॉपिक से जो क्वेश्चंस जो फ्रेम रहते हैं वो सारे आपके टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देते हैं कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे क्लियर हैं कि नहीं। तो मैंने बस बुक से स्टडी करके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते गई, और जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन बैंक में मेरे आंसर्स गलत होते थे फिर से मैं उनको रीअटेम्प्ट करती थी कि फिर से मुझसे क्या गलती हुई, फिर से मैं पढ़ती थी और फिर से रीअटेम्प्ट करती थी सारे ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक को। सो बस यही है कि आपने फॉलो एक्सपीरियंस को बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए और प्लस आप साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस आप सैम्पल क्वेश्चन और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए। Okay, I hope this advice will help our fellow aspirants. So this was it. Thank you so much for taking out your time and joining us for this session. We are really pleased to have you here, and yes, once again, many congratulations. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for inviting me for the interview session.